Now let us explain what is the difference between a system and the control system. Okay, this is a system. This system is also arrangement of the physical component. You are applying the input and it producing the output, which may be the desired or not desired. Okay, but when you talk about the control system, you are applying the input, it producing the output, but it must be the desired output. So that is the difference between the system and the control system. Okay, now let us take these things, whatever we discussed, let us understand these things with the help of example. Okay, for example, our fan. What is the purpose of the fan? Obviously this fan is made up of some physical component. For example, it has blends, it has some internal circuit diagram. Okay, it may have the resistor, may have the capacitor. Okay, so these are the, obviously this is my system, and this system is completely made up of the physical component. Okay, now you are applying the input. What is my input in the system? This system is a AC power supply, okay, which is 220 or 50 hertz, which is work on it. Okay, we are applying the input in this system, which is our fan, and it producing the output, which is the airflow. Okay, so this is my system because I am applying the input. Obviously this system is made up of some physical component and it producing the output, which is my airflow. As I already told you कि हमारा इनपुट एंड आउटपुट कुछ भी हो सकता है. आपके वोल्टेजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, जैसे सेंसर्स को आप इनपुट जो है वो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, एंड वो जो आउटपुट है वो आप डेवलप करते हैं सम वोल्टेजेस और करंट. सो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ द सिस्टम, यू कैन से दैट. नाउ this system is applying, I am applying this system is AC power supply and producing the output, which is my airflow. Okay, and this can be considered my system. But a fan cannot be say the system when, कब आप उसको system नहीं कहेंगे? जब आप इसको input भी apply कर रहे हो, it don't have any blends, it is not able to produce the airflow. ओके, ये रोटेशन तो करेगा लेकिन ये आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा. नॉट डिजायर्ड आउटपुट, बट ये आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं देगा. सो the fan without blends cannot be said to be a system because it is not providing you a proper or desired output. Okay, so in this way we cannot say the fan is a system, but fan with the blends can be a system because it providing you output, which is my airflow. Now a fan can be the system. A fan with a blends with but without regulator can be said to be a system because it provides you a proper output, which is the airflow, but it cannot be said to be a control system because it is not providing you a desired output or controlled airflow. Okay, अगर हम regulator की बात ना करें up to now, this can be said to be a system because when you are applying the input, it is providing you output, which is the airflow. But this airflow is not a controlled airflow because we are talking about the fan without regulator. But when this system can be the control system, the fan with the blends and with the regulator can be said to be a control system because it provide you a desired output or controlled airflow. Okay, जब आप regulator के through, which is my controlling element, you are applying the input now. Okay, now with the help of this regulator, you are able to control this fan, the airflow of fan. So this can be said to be a control system in this manner. Okay, otherwise the fan without regulator can be said to be simply a system because it providing you output. I hope now you are clear about these things. In other words, we can say that a system which is consisting of number of components, they are connected together to perform a specific function in which the output is controlled by the input. Okay, output जो है, output is what? In this example, what is my output? My output is the airflow. Okay, it is controlled by the input. What is my regulator? Regulator can be considered, we can control this output with the help of regulator. Okay, so we can say that the output is controlled by the input. So this system is said to be a control system. Okay, you
you are clear about these things, that what is the control system, what do you mean by the system, what is the control system, okay, what is and now we can able to classify the control system. अगर आपने कोर्स contents अब देखा होगा तो सबसे पहले क्या था, introduction of control system, which we discussed. Okay, what is a control system? So you should know what is an introduction of the control system. After that we will be जी बताओ. Madam, is there any application of the uncontrolled system? Can you let us know? Uncontrolled system. Yes, ma'am. So there are very lot of examples of uncontrolled systems. So we will understand these things in the coming in this lecture as well. So जैसे मैंने आपको बताया कि जी ये जो आपका फैन है up to now, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फैन जो है वो सिस्टम है, because it is providing you the output which is the airflow which is not a controlled. अगर आपने यहाँ पर कुछ किसी जगह पर अगर आपने without regulator if you are using the fan, you cannot able to control the airflow of that fan. So this can be said to be a uncontrolled system. This is a system, but it is uncontrolled because we cannot control it. So as here, this is the example of uncontrolled system. A fan with the blends but without a regulator can be a system. This system is also uncontrolled system. Why? Because we are not able to control it. कोई भी अगर आपका कोई भी सिस्टम है, अगर वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करके दे रहा है तो हम उसको कहेंगे दिस इज माय सिस्टम. अगर आपसे कोई भी अगर आपने जैसे आपने यहाँ पर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो ये एग्जांपल इसमें क्या है कि दिस इज नॉट माय सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू अ आउटपुट. ये कोई भी अगर आपने सिस्टम डेवलप किया है वो अगर आपको आउटपुट ही नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली वो मेरा सिस्टम ही नहीं हुआ. क्योंकि सिस्टम आप किसको कह रहे हैं? सिस्टम हम कहते हैं कि combination of physical components that is connected together to perform a particular task. Okay, अगर आपने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है, फैन लगाया है, उसके इंटरनल सर्किट डायग्राम आपने बनाए हैं, अगर आपको ये आउटपुट दे ही नहीं रहा जब आप इसको इनपुट अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट माय सिस्टम. ओके, लेकिन जब आपको कोई भी सिस्टम मिले लेकिन वो सिस्टम आप कंट्रोल ना कर पाए तो ऐसे सिस्टम्स को हम अनकंट्रोल्ड सिस्टम कहेंगे. दैट इज आल्सो अ सिस्टम बट दे आर द अनकंट्रोल्ड सिस्टम. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जैसे आप ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी कौन से एग्जाम्पल्स हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं. ठीक है मैडम, जी दिया ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया. मैम, जब हम इसको फैन को इनपुट देंगे तो लाजमी जाहिर सी बात है वो आउटपुट तो आपका वॉइस बाबा ॾिसो हिकिड़ो तव्हांखे कंफ्यूज थियण जी ज़रूरत न आहे बिल्कुल भी. मां तव्हांखे जेको एग्जाम्पल ॾियां पई उहो मां तव्हांखे इन सेंस में ॿुधायां पई त जीअं तव्हांखे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर थियनि त असांजा सिस्टम्स कहिड़ा हूंदा आहिनि, असांजा कंट्रोल सिस्टम्स कहिड़ा हूंदा आहिनि. ठीकु आहे. ऐं जेकॾहिं ॾिसो सभ खां पहिरियां इहो आहे व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम. उहे सिस्टम असां उनखे चवंदा आहियूं जॾहिं तव्हां उन्हनि खे इनपुट अप्लाई कयो त तव्हांखे उहो आउटपुट प्रोवाइड करे ॾिए. ठीकु आहे. अदरवाइज़ जेकॾहिं तव्हांखे कंहिं बि सिस्टम मां आउटपुट नथो मिले त उहो तव्हांजो सिस्टम थींदो ई न, छाकाणि त तव्हां सिस्टम डेवलप ई हिन लाइ था कयो त तव्हांखे को पर्टिकुलर आउटपुट न मिले. ठीकु आहे. को बि डिज़ाइनर का बि शइ ठाहींदो आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन मां कुझु अचीव करण लाइ ठाहींदो आहे न. बट एनीथिंग अगर आपने किसी भी फिजिकल कॉम्बिनेशन से आपने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, आपने इसमें रेजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया, अगर आप उसको इनपुट अप्लाई करके दे रहे हैं, आप इसको इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और वो वहां से आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा तो आप उसको सिस्टम नहीं कहेंगे. ठीक है. सो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल हमारा फैन है, अगर उसमें ब्लेड्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल, अब ये इसमें भी तो फिजिकल कंपोनेंट मौजूद है ना, लेकिन आपने इसको इनपुट अप्लाई किया तो अब फैन का काम ही एयर फ्लो करना है. ठीक है, आपको एयर प्रोवाइड करके देना है. लेकिन अगर आप उसको इनपुट अप्लाई कर रहे हैं
उससे आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा, भले वो रोटेशन कर रहा है, लेकिन उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या है, उसका जो वहां से आपको आउटपुट क्या मिलना है, एयर फ्लो मिलना है। अगर आपको एयर नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली वो आप उसको सिस्टम ही नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपने इसको अप्लाई किया इनपुट और वहां से आपको एयर फ्लो आ रहा है, तो दिस इज अ सिस्टम। क्योंकि आपने फैन, अब फैन का तो कोई और काम तो नहीं है ना, फैन का काम क्या है, टू प्रोवाइड यू एयर फ्लो, ठीक है। लेकिन आपने उसको इनपुट अप्लाई किया और वहां से आपको आउटपुट मिल रहा है विच इज एयर फ्लो, यू कैन से दिस इज अ सिस्टम। अब हम उसको कंट्रोल सिस्टम भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने जैसे इसको इनपुट अप्लाई किया वो आपको आउटपुट दे रहा है कंटिन्यूसली सेम एयर फ्लो, ओके। लेकिन जब आप रेगुलेटर के साथ फैन को यूज कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे कि नाउ दिस इज माय कंट्रोल सिस्टम। किस तरह कंट्रोल सिस्टम? कि आप रेगुलेटर के थ्रू द इनपुट, बिकॉज आप रेगुलेटर के थ्रू आप बेसिकली इनपुट, ये आपका इनपुट ही हुआ ना, रेफरेंस, आप रेफरेंस पॉइंट सेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जो है वोल्टेजेस अलो कर रहे हैं, ठीक है। तो विद द रेगुलेटर बेसिकली यू कैन कंट्रोल द एयर फ्लो, मीन्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। समटाइम जब आप सर्दियाँ हो जाती हैं तो हम एयर फ्लो की जो स्पीड है फैन की वो हम कम कर देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बढ़ा देते हैं। तो अब यू आर कंट्रोलिंग दिस एयर फ्लो। आप आउटपुट को, अब एयर फ्लो इज व्हाट, दिस इज द आउटपुट ऑफ द फैन। अब आप आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू द इनपुट, सो दैट सिस्टम इज सेड टू बी अ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सो ये एक ही मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, फैन का। इस फैन के थ्रू वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिस्टम, सिस्टम क्या है, और कंट्रोल सिस्टम हम किसको कहेंगे, ठीक है। मैडम, हाँ ये मैडम थोड़ा एग्जांपल जो आपने दिया वो समझ में आया कुछ। लेकिन मैडम अगर हम इस जो फैन है हम इसको रेगुलेटर के अलावा हम इसको यूज करेंगे तो फिर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, अगर हम इसको स्विच अगर ऑफ कर दें आप तो। देखें देखें बेटा, तो मैडम अगर ये फर्दर फर्दर कंट्रोल हुआ अगर हमने रेगुलेटर यूज किया तो। नहीं, ॾिसो ॾिसो कंट्रोल, हाणे ॾिसो न बाबा, तव्हां कंफ्यूज़ न थियो हिन ॻाल्हि में। जॾहिं तव्हां स्विच जे थ्रू ऑन ऑफ कयो था, ठीकु आहे, ऑन ऑफ कयो था, बेसिकली स्विच आहे जेको तव्हांखे इनपुट ॾिए, तव्हां इनपुट जीअं अगरि तव्हां चओ था न फर्दर कंट्रोलिंग, या फर्दर कंट्रोलिंग न आहे, बेसिकली दिस इज़ द कंट्रोलिंग। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, तव्हां कंहिं बि सिस्टम खे इनपुट ॾींदो त कंहिं न कंहिं थ्रू इनपुट ॾींदो न, ठीकु आहे। यस फॉर मैडम। एग्जाम्पल तव्हां स्विच जे थ्रू इनपुट ॾिनो, ठीकु आहे, स्विच खे ऑन कयो त लाइट अची, तव्हां एसी वोल्टेज ॾिना, स्विच खे ऑफ कयो त एसी वोल्टेजिस ख़तमु थी विया, ठीकु आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, कंहिं सिस्टम खे तव्हांखे हलाइणो आहे त उनखे पहिरियां तव्हां इनपुट ॾींदो न। दिस इज़, अगरि जी स्विच मैडम। जे थ्रू बेसिकली असां उनखे इनपुट था ॾियूं, लेकिन रेगुलेटर जे थ्रू असां उनखे कंट्रोल था कयूं, उनजे इनपुट खे, उनजे आउटपुट खे, बेसिकली एयर फ्लो खे असां कंट्रोल था कयूं। जॾहिं तव्हां स्विच जे थ्रू ऑन कयो ऐं ऑफ कयो, बेसिकली स्विच जे थ्रू तव्हां इनपुट अप्लाई कयो था ऐं इनपुट खे ख़तमु कयो था, ठीकु आहे। ऐं रेगुलेटर जे थ्रू तव्हां उनखे फर्दर जेको आहे उहो उनखे कंट्रोल कयो था, उनजे एयर फ्लो खे, ठीकु आहे। नाउ लेट अस यस। अंडरस्टैंड this classification of control system. You will be further understand about the control system, ठीकु आहे। जीअं जीअं अॻियां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे शयूं हलंदा वेंदासीं त ऑब्वियसली उहे तव्हांजूं शयूं जेके आहिनि फर्दर एक्सप्लेन थींदी वेंदियूं ऐं तव्हांजा जेके कॉन्सेप्ट्स आहिनि उहे क्लियर थींदा वेंदा। असां कंट्रोल सिस्टम्स खे इलाही तरीक़े सां डिवाइड कंदा आहियूं। वी कैन क्लासिफाइड अवर कंट्रोल सिस्टम इन सो मेनी वे, बट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल एक्शन वी विल डिवाइड or we can classify the control system in two major categories, ठीक है। उहे कहिड़ी categories आहिनि? They are the open loop control system या closed loop control system। जेको तव्हां uncontrolled चओ पिया न, basically uncontrolled can be considered as a open loop control system, क्योंकि हम इसको कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। anything which is able to control, अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए थ्रू द इनपुट तो वो आपका कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। So